Please do not forget to subscribe the channel and please press the bell icon. Okay students, so good morning once again. Now today we'll learn how to find out the values of trigonometric ratios for theta is equal to 30 degree, 45 degree and 60 degree. The question that you may get here is geometrically find the values of all trigonometric ratios for first part theta is equal to 45 degree I am taking, second part theta is equal to 60 degree and third part theta is equal to 30 degree. So this is the question that may be asked here. Geometrically you have to find out the values of the trigonometric ratios for theta is equal to 45, theta is equal to 60 and theta is equal to 30 degree. So first let's find out the values for theta is equal to 45 degree. When we say theta is equal to 45 degree, थीटा इज 45 डिग्री. बच्चों जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, बेसिकली यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे. राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल और हमने कहा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो यहाँ पर थीटा हमने मान लिया ये वाला एंगल, दिस इज 45 डिग्री. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which angle B is 90 degree, angle C that is theta, this is equal to 45 degree. Now let's find out the measure of angle A. The measure of angle A will be 45 degree again. This will also be equal to 45 degree. By angle sum property of a triangle, the measure of angle A will also be equal to 45 degree. अब देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, these two angles are equal, both these angles are equal, दोनों 45 है. और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब दो एंगल्स 45 होते हैं तो जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं, their opposite sides are also equal. That means AB is equal to BC. It means triangle ABC is a right isosceles triangle. We have taken triangle ABC as a right isosceles triangle. Let's assume AB equal to BC and this is equal to 1 unit. AB equal to BC is equal to 1 unit. Now AB is 1, BC is also 1. First we have to find out the length of AC. AC की लेंथ फाइंड करना बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से. सो वी गेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो that is AB is 1 unit, so it is 1 square. BC is also 1 unit, so again 1 square. 1 plus 1, this is equal to 2. Therefore AC is equal to root 2. So from here we have considered this AB and BC as 1 unit. AB और BC दोनों को हमने 1 assume किया था और AC की लेंथ आ गई हमारे पास root 2. The length of AC we have obtained as root 2. Now let's write all the trigonometric ratios for theta. We are taking this angle as theta. We are taking angle C is equal to theta. Angle C को हम theta ले रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा. Angle C is theta. So from here and here we are having theta is equal to 45 degree. So when I say sin theta, this side will be perpendicular. यहाँ पे थीटा ये एंगल लिया है तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस
और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज. So from here, let's write the value of sin 45 from the figure. So sin 45 degree will be equal to perpendicular, that is AB, upon hypotenuse, that is AC. So the value of sin 45 is 1 upon root 2. Value of sin 45 is 1 by root 2. Similarly, cos 45 degree, base BC, hypotenuse AC. So it is equal to 1 by root 2 again. Then comes the third one, that is tan 45 degree, which is equal to perpendicular upon base. Perpendicular is AB, base is BC. AB upon BC, 1 upon 1, and this is equal to 1. Therefore the value of tan 45 is 1. Now let's write the reciprocals of these trigonometric ratios. तो बेटा sin का reciprocal होता है cosec. So we will get cosec 45 degree 1 by root 2 का reciprocal हो गया root 2. इसी तरीके से cos 45 का reciprocal होता है sec 45. Sec 45 1 by root 2 का reciprocal हो गया root 2. So sec 45 is root 2. और tan 45 का reciprocal होगा cot 45. तो cot 45 1 का reciprocal 1. So this way we have obtained the values of all trigonometric ratios for theta equal to 45 degree. Okay. Theta is equal to 60 degree बच्चों. Now you see, whenever we talk about theta is equal to 60 degree, the type of triangle which comes to our mind, जो हमारे दिमाग में आता है, वो होता है equilateral triangle. That is an equilateral triangle. So in an equilateral triangle, the measure of each angle is 60 degree. This is 60 degree. The other one is also 60 degree. And here again it is equal to 60 degree. Let the measure of each side be A. Or even you can take it as 1. 1 भी ले सकते हैं बच्चों. Let's take the measure of each side be 1 unit. So this is an equilateral triangle. Now we know that in an equilateral triangle, अब देखिए अभी हमने डिस्कस किया था बच्चों कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करना है, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए. तो यहाँ तो सारे एक्यूट एंगल्स है. व्हाट वी डू, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए. ड्रॉ AD perpendicular to BC. Draw AD perpendicular to BC. So when we have drawn this as perpendicular, now see I am drawing this triangle separately now. This is 90 degree. This one is 60 degree. The measure of this angle will be equal to 30 degree. The measure of this angle, that is this one is B, here it is A, this is D. So measure of angle BAD will be equal to 30 degree. Right? Now from this triangle, so initially what we have done, we have taken, consider an equilateral triangle ABC with AB equal to BC equal to AC equal to 1 unit. Then we have draw AD perpendicular to BC. Now as we know that the perpendicular drawn from the vertex of an equilateral triangle bisects the base. So as it bisects the base, so therefore BD will be equal to DC and the measure of each part will be half of AC. Half of AC, that is 1 upon 2 units. So BD and DC both are equal to 1 by 2 units.
BD is 1/2 units, AB is 1 unit. Now let's apply Pythagoras theorem to find out the length of AD. So by using Pythagoras theorem, AD square will be equal to AB square minus BD square. This is hypotenuse. So hypotenuse square minus base square. So AB square minus BD square. 1 square minus 1/2 square. 1 minus 1/4, which is equal to 3/4. Therefore AD will be equal to √3/2. The length of AD is √3/2 units. Okay. Okay. So AD is √3/2 units. Now let's see. First we'll consider theta is equal to 60 degree. Now we see which angle is theta here. The angle ABD is theta. Angle ABD we are taking as theta, which is equal to 60 degree. And for this angle as theta, this is theta, so AD will be the perpendicular. So here perpendicular will be AD, base will be BD, and hypotenuse is fixed, that is AB. So now with the help of this perpendicular AD, the length of AD is √3/2. Base BD, the length is 1/2. Hypotenuse AB, the length is 1 unit. Now with the help of this we can easily write down the values of all trigonometric ratios for theta is equal to 60 degree, perpendicular, base and hypotenuse we already know. So from here we will get sine theta, that is sine theta, theta is 60 degree, perpendicular √3/2 upon hypotenuse 1. So the value of sine 60 is √3/2. Cos theta, cos 60, base 1/2 upon hypotenuse 1. So it is equal to 1/2. Tan theta, that is perpendicular upon base. Perpendicular is √3/2 upon base, that is 1/2. So from here we get 2 cancelled here. So this is equal to √3. So the value of tan 60 is √3. Now let's write the values of all other reciprocals of these one. That is, where reciprocal of sine 60 will be cosec 60 and reciprocal of √3/2 is 2/√3. Reciprocal of cos 60 is sec 60 and 1/2 reciprocal is 2. So sec 60 is 2. Reciprocal of tan theta is cot theta. So we get cot 60 is equal to 1/√3. So these are the values of trigonometric ratios for theta is equal to 60 degree. Okay. Okay, now we have to find out the values for theta is equal to 30 degree. अब बच्चों थीटा 30 डिग्री के लिए लिखना है आपको, और यहाँ पे आप देखिए सेम ट्राइंगल में आप देखते हैं BAD is 30 degree. BAD is 30 degree. That means BAD is 30 degree here. तो यहाँ पे जो थीटा लिया है वो होगा एंगल BAD. थीटा इज एंगल BAD. अब देखिए BAD के रिस्पेक्ट में यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा बच्चों. तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर होगा, एंगल ये है तो परपेंडिकुलर BD होगा. सो परपेंडिकुलर इज BD
which is equal to 1/2 units. Perpendicular is BD which is equal to 1/2 units. अब आप देखिए बेस का है, बेस is AD which is equal to √3/2 units, and obviously hypotenuse remains the same. So hypotenuse is AB which is equal to 1 unit. So here there is interchange in perpendicular and base. जब हमने एंगल चेंज किया यहाँ पे सेम ट्राइंगल में, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाएगा बच्चों. परपेंडिकुलर हमने पहले भी कहा था, जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला साइड अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर, इसलिए यहाँ पे BD परपेंडिकुलर है, AD बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज इज AB. Now with the help of this you can write down the values of all trigonometric ratios for theta is equal to 30 degree now. So we'll have sin 30 perpendicular upon hypotenuse, perpendicular 1/2, hypotenuse 1, so value of sin 30 is 1/2. Cos 30, formula base upon hypotenuse, it is √3/2/1, so we get √3/2. Then comes tan 30 degree, tan 30 perpendicular upon base, perpendicular is 1/2, base is √3/2, so we get the value as 1/√3, that is tan 30. अब हम इनके रेसिप्रोकल्स लिखेंगे बच्चों. कोसेक 30 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2. sec 30 it is the reciprocal of cos, so its value will be 2/√3, and value of cot 30 which is the reciprocal of tan 30, it will be equal to √3. So this way we have calculated the values of all trigonometric ratios for theta is equal to 30 degree also. Okay students, now theta is equal to 0 degree. थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. बच्चों प्रैक्टिकली 0 डिग्री बनाना तो पॉसिबल ही नहीं होता है, तो उसके लिए आपको सिर्फ वैल्यूज अभी याद रखना है, बाद में हम डिस्कस करेंगे कैसे आती है वैल्यूज. सो फॉर 0 डिग्री विल हैव sin 0 इज इक्वल टू 0, sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, cos 0 डिग्री इज 1, देन tan 0 डिग्री is 0. Then reciprocals of this, that is cosec 0 degree. Cosec 0 degree is not defined because the reciprocal of 0 is not defined. Then sec 0 degree it is 1, and cot 0 degree it is again not defined. So these are the values of trigonometric ratios for theta is equal to 0 degree. Further we have theta is equal to 90 degree. अब 90 डिग्री भी हम ट्राइंगल में एक ही बना सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में. तो यहाँ पर 90 की वैल्यूज भी आपको सिर्फ याद रखना है, प्रूफ एंड एक्सप्लेनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. सो वी हैव sin 90 डिग्री. sin 90 डिग्री इज 1, sin 90 इज 1, cos 90 is 0, tan 90 is not defined. Reciprocal of sin 90 is cosec 90 which is equal to 1. Reciprocal of cos 90 is sec 90 which is not defined, and reciprocal of tan 90 will be cot 90 which is equal to 0. So these are the values of trigonometric ratios for theta is equal to 0 degree and 90 degree. Okay, note it down please. Okay students, so let's learn how to fill this table just by remembering the values of any one trigonometric ratio. कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज आप याद रख के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लिख सकते हैं इजीली.
सो हाउ टू कंप्लीट द टेबल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए यहां पे मैंने लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हैं, यहां पर इधर मैंने लिखी है एंगल, नॉट वैल्यू, सॉरी, एंगल लिखा है यहां पर, मतलब थीटा लिखा हुआ है. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. अब देखिएगा आपको सिर्फ 5 नंबर्स याद रखना है बच्चों. यू नीड टू रिमेंबर ओनली 5 नंबर्स, और वो 5 नंबर्स है आपके 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1. तो बच्चों ये आपको 5 नंबर्स याद रखना है. यू नीड टू रिमेंबर दिस 5 नंबर्स: 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1/2. ओके, दिस इज 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. अभी देखते हैं ये नंबर्स कैसे आए, ये भी देखना है आपको. तो यहां पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 0, 1, 2, 3, 4. I have written here 0, 1, 2, 3, 4. Now what we do? Divide by 4. Let's divide each of these numbers by 4. Here I am writing divide by 4. Divide by 4. तो ये जो नंबर्स लिखे थे 0, 1, 2, 3, 4, आपको इसको 4 से डिवाइड करना है. तो 0 डिवाइड बाय 4 इज 0. दिस इज 1/4. दिस विल बी 2/4 and that can be written as 1/2. और यहां पर आ गया 3/4 and here it is 4/4 which is equal to 1. अब इसके बाद हमको यहां पर केवल इन नंबर्स का स्क्वायर रूट लेना है. Now we take the square root of these numbers obtained. तो 0 का स्क्वायर रूट है 0, 1/4 का स्क्वायर रूट है 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट लिखा है 1/√2, और 3/4 का स्क्वायर रूट लिखा है √3/2, और 1 का स्क्वायर रूट लिखा है 1. तो यहां पर ये जो वैल्यूज मिली, दीज आर वैल्यूज ऑफ साइन थीटा. साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1. Okay, so this way we have obtained the values of all trigonometric ratios for sin theta. अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, लिसन वेरी केयरफुली. अब आपको क्या करना है, कॉस की वैल्यूज लिखने के लिए सेम वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में लिखिए. सेम वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में, मतलब पहले आएगा 1, उसके बाद हो गया √3/2, उसके बाद हो गया 1/√2, नेक्स्ट कम्स 1/2 एंड नेक्स्ट कम्स 0. So this is 1, same values written in reverse order: √3/2, 1/√2, 1/2, 0. Okay, clear? अब इसके बाद tan थीटा लिखना है बच्चों यहां पर. तो रिमेंबर tan थीटा is equal to sin theta upon cos theta. Tan theta is equal to sin theta upon cos theta. So sin theta upon cos theta, 0/1, so this is 0. 0/1 is 0. Then 1/2 upon √3/2, that is 1/√3. Further 1/√2 upon 1/√2, and that comes out to be 1. Then √3/2 upon 1/2, this is equal to √3, and 1/0 is not defined. This way we have obtained the values of tan theta. अब आप देखिए बच्चों, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक. तो 1/sin theta here, 1/sin theta. Cosec theta is equal to 1/sin theta. सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 1/cos थीटा. कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 1/tan थीटा. तो 1/tan थीटा बच्चों. 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0.
अब sec थीटा इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा. sec का रेसिप्रोकल cos है, tan का cot और sin का cosec. तो यहाँ पे sec का रेसिप्रोकल, sec is the reciprocal of cosec, sec is the reciprocal of cos. तो 1 by cos थीटा. तो cos का रेसिप्रोकल लिखेंगे बच्चों, cos 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 by 2 का रेसिप्रोकल 2 upon √3, 1 by √2 का रेसिप्रोकल √2, 1 by 2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड. अब कोसेक की वैल्यूज लिखने के लिए या तो आप सेम वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए या आप साइन थीटा का रेसिप्रोकल लिख दें. तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1 by 2 का रेसिप्रोकल 2, 1 by √2 का रेसिप्रोकल √2, √3 by 2 का रेसिप्रोकल 2 upon √3 और 1 का रेसिप्रोकल हो गया 1. ओके, so this way we have learned how to form the whole or how to complete the trigonometric table for theta is equal to 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So students, learn these values, learn how to complete the table, practice it at least 5 times today itself. Within 24 hours, if you revise it, you will be remember for a longer time. So thank you very much. Enjoy your day.